Hi everyone. As we are yet waiting for the participant, I think since we are out running short of time, we'll quickly begin the day. Uh, so I'll just give you a brief. So yesterday we celebrated the International Day of Education and the National Girl Child Day. So we thought of commemorating it today with a webinar on Beti Bachao, Beti Padhao. And as we know, there has been an increased attention on issues that matters to girls, and more opportunities for girls have been there throughout the globe in the last 10 years. Yet the investment in girl rights remain limited, and they continue to confront a lot of challenges in fulfilling their potential, and made worse by the current concurrent crisis of climate change emergencies and the COVID-19 pandemic. So towards this, we Sphere India, in collaboration with SOS Children's Village of India, are hosting this webinar today. And we have joined by an eminent set of panelists for the day, and I'll just give a quick round of introduction to each one of them. So first up, we have Mr. Mitra Ranjan, who is the coordinator for Right to Education Forum. Looking at the outreach aspects of our team, Mitra Ranjan has been working for child rights, especially with reference to their rights to education and living a life of dignity. He is particularly interested in the universalization of school education and believes that quality and inclusion education for all with equal opportunity is possible only through a strong public education system. We welcome you, Mr. Mitra. We have Ms. Ekta Chanda, who is the Senior Specialist Education Child Fund India with us. In her experience of more than 18 years, she has designed, led, and managed multilingual, context-based, holistic education program with active community involvement, and has also been involved in creating and implementing interventions around promoting social and emotional learning competencies in children and creating a supportive ecosystem in schools and at homes to support the same. We welcome you, Ms. Ekta ma'am. Next, we have Dr. Shaheen Ansari, who's the Development Support Manager for Child Rights and You, CRY. And Dr. Shaheen has done his PhD from JNU and Public Advocacy Program from National Center for Advocacy Studies, Pune. He's trained practitioner of socio and emotional learning program. His focus area is child protection and child rights during emergencies. His expertise is also on the education and social and emotional learning. Welcome, Mr. Shaheen. Now we have Mr. Sudeepta from our collaborating organization. He works there as an assistant director, FSP, and he has been working in the development sector for 16 years in different capacities in SHG, livelihood, microfinance, child rights, and safeguarding. He is with SOS since 2009 and has been placed in 3 different states like Chhattisgarh, Meghalaya, and Bihar. He's currently working in the community through the SHG module and for the children's development through the Bal Panchayat module. Welcome, Mr. Sudipta. And now we have the moderator for the day with us, who is Mr. Danish Aziz, the education specialist from UNICEF India, who is working in the Jammu and Kashmir state. He is a development professional working in the humanitarian sector for over 2 decades with government, grassroots level NGOs, as well as international humanitarian development support agencies. He has wide-ranging interest in areas of humanitarian work and has worked in education, disaster management, child protection, and livelihood. Welcome, Mr. Danish. Thank you. And with this, without wasting much time, we'll quickly jump into the panel, and I'll just create a ground rule for the entire panel discussion. We have 4 panelists with us, and each have been allotted 10 minutes each, and they have 2 questions to cover up. So it would be good if you can try to wind it up in 4 minutes each, so that the rest too we can take up for the Q&A or open discussion. So it would be really good if you can adhere to the time, because even our moderator has to jump up for another commitment. So and yeah, even the participants, if you have any questions, any queries, any add-ons, you can just put it in the chat box or keep it up for the Q&A, which will happen at the end. Thank you, and over to you, Mr. Danish, for taking us through the discussion. Thanks, Joe. Hi, and distinguished colleagues. I can see that we have a very stellar panel, and it would be
look forward to a very interesting discussion. So to begin with, since we've already given a background of and it's also coincidental that we have two very important days celebrated yesterday. While there is the UN International Day for Education, we also have the Government of India's National Girl Child Day. So that is why I think in the in the kind of way that these two days have actually kind of converged. So I would like to start off this discussion because we are talking in this background of the right to education, and as we know, the right to education has been around for quite some time. So I would like to first of all learn from our learned colleague, Mr. Mitra Ranjan, because he's been working a lot, some really deep, kind of deep work on it. So Mitra, my first question to you was that let's do a stock take of whether and how the Right to Education Act has helped in bridging the gap in education, specifically for girls. If we talk about girls, and and what are the areas that we still need to kind of make advances in? Thank you, Danishji, and also Sijlo Abraham ji, for inviting me on this in this webinar. My voice is going. Hello. Yeah, your voice is fine. I mean, if you can just you can listen. Yeah, a little bit of a light. I think against the light. That's fine, but we can hear you. Haha. Okay. So, Mitraji, since we have this thing, I think it makes the audience. So I think you can also like use speak in a bilingual format as well, so that I think we yes. Just make sure that everybody tries to understand in the audience. We might have people with bilingual. Yes, sure. Thank you. Sure, Danish. सबसे पहले देखिए इस वेबिनार का जो पूरा थीम है, और खास करके हम हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन सवाल ये है सबसे पहले जो आपने कहा कि आरटी एक्ट किस तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है या कितना उसने स्ट्रेंथन किया है गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। निश्चित रूप से आरटी एक्ट अपने आप में एक मुकम्मल एक्ट के रूप में सामने आया हम लोगों के, और अब 12 साल हो गए हैं, लेकिन इन पूरे 12 सालों में काफी तस्वीर बदली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनरोलमेंट के स्तर पे काफी कुछ हुआ, खास करके लड़कियों को काफी सारे अवसर भी इसने मुहैया कराए, लेकिन दिक्कत क्या है कि आरटी एक्ट अपने आप में उस तरह से कमिटमेंट के साथ सरकार की तरफ से लागू हो नहीं पाया, और न ही उस तरह से लागू करने के पीछे कोई मजबूत इच्छा शक्ति दिखी है। मैं अगर कुछ सबसे पहले तो इस जो पूरा वेबिनार का विषय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की काफी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम है, लेकिन अगर उसके कुछ अंदरूनी तहकीकात हम करें कि ये पूरा प्रोग्राम किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर हम यहाँ से देखें तो हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अधिकांश हिस्सा चला गया उसके एडवर्टीजमेंट में, उसके विज्ञापनों में, और तकरीबन 80% जो हिस्सा है पूरे इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का, वो उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ। तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि बेटियों को पढ़ाने की जो कवायद थी वो कितना आगे बढ़ पाई। मैं इसमें एक चीज ये कहूंगा कि हमें इस पूरे संदर्भ को देखना चाहिए कि पिछले कुछ समय से आरटी एक्ट जो जितने दूर तक लागू हुआ है, यानी 25.5% एक नेशनल एवरेज है, अभी 25.5% स्कूलों में ही अभी आरटी एक्ट लागू हो पाया है, और इसमें भी आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड
या इस तरह के और भी जो उत्तर प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं, उसमें हालत अभी भी काफी खराब है। तकरीबन 11% इम्प्लीमेंटेशन है बिहार में, 10% के अराउंड इम्प्लीमेंटेशन है झारखंड में। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है कि हम बच्चियों को पढ़ाने में कितने आगे हम लोग अभी तक जा पाए हैं। दूसरी बात मुझे लगता है कि हम लोगों को ये भी देखना है कि क्या इनरोलमेंट जो स्तर हुआ बच्चियों का, क्या वो रिटेन कर पा रही हैं? क्या वो आगे के जो क्लासेस हैं वहां तक पहुंच पा रही हैं? अगर हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं या करते रहे हैं, और आरटी फोरम ही नहीं, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस बात की मांग करते रहे हैं कि उनको स्कूल एजुकेशन को एटलीस्ट यूनिवर्सलाइज किया जाए। और यूनिवर्सलाइज करने का मतलब ये है कि उसके लिए पर्याप्त बजट, पर्याप्त उसके लिए विल पावर, ये जब तक नहीं होगा तब तक उस तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अभी बजट सेशन देखिए, अभी 1 तारीख को बजट पेश होगा। पिछले साल एक नेशनल इंसेंटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन करके एक प्रोग्राम चला करता था। तो इसके पहले यानी 2020-21 के बजट में उसके बजट को काट करके 110 करोड़ रुपए किए गए थे, उसके बाद 1 करोड़ किया गया, और फाइनली पिछली बार वो पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया। और जो कि खास करके जो दलित समुदाय से आने वाली जो बच्चियां थी, उनके लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज हैं उनके आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके कारण काफी लोग उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये देखिए, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी जो अन्य वक्ता हैं वो अलग अलग बातचीत रखेंगे विभिन्न बिंदुओं पे। लेकिन मुझे एक बात इसमें और कहनी है कि अगर पूरे समाज के ताने बाने को देखा जाए, जिसमें कितना भेदभाव है, और खास करके जो जेंडर के मसले पे जो भेदभाव है, अन्य जो डिस्क्रिमिनेशंस है, उसके इंटेंसिटी को ये डिस्क्रिमिनेशन और भी आगे बढ़ा देता है। तो अपने कुछ जो हम लोगों की सफलताएं हैं, खास करके बच्चियों के आगे बढ़ने पढ़ने के मामले में, हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के समय में उस पर भी काफी बड़ा ग्रहण लगा है, काफी मुश्किल हुई है। और तमाम तरह की रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिससे ये पता चलता है कि बच्चियों की एक बड़ी संख्या जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, उससे बाहर हो जाने के कगार पे। हाँ, वो ये काफी मतलब एक बड़ी बात है। और इस जी, तो ये मुझे लगता है दानिश जी, एक तो ये बात मैं यहाँ के जो प्रतिभागी हैं उनके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ। और इसके आगे मुझे लगता है कि और भी बातें अभी होंगी, जैसे कि अभी जो सेकेंडरी स्कूलों की जो कमी है, हायर सेकेंडरी स्कूलों की कमी है, उसका नतीजा ये होता है कि एलिमेंट्री से जब हम सेकेंडरी में जाते हैं तो तमाम उसके आंकड़े काफी भयावह हैं, काफी सारी बच्चियां उससे बाहर हो जाती हैं। और मैं आगे चल करके जो डिस्कशन होंगे उसमें कुछ आंकड़े अगर होंगे तो वो भी मैं कुछ रखूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि एक जो आरटी एक्ट का जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है, उसको अगर हम लोग एक सही जज्बे के साथ करने की कोशिश करे सरकार, और एक बजट रोड मैप के साथ, तो फिर शायद आगे कुछ अच्छा संभव होगा। तो फिलहाल मैं अपनी बातचीत यहीं पे जी मित्रा जी, बिल्कुल सही कहा कि देखिए, एक्ट जो होता है वो चूंकि उसका by definition the act in itself is it's more of a like a kind of a guideline kind of a thing that these are the shine. I think एक ecosphere बनाना, एक action plan बनाना, उसको reality बनाना, to turn that act into, I think steps should be taken, like the way the national education policy now has been defined. It has certain guidelines and given, but to get there, to reach there, as to what what are the, I mean, when we define a policy, I think it's also important to understand some root causes. So to go to Ekta, Ekta, if you can also share with us very briefly, so what are the root causes? Like if we are to define like a policy for that, that policy is always based on certain identifying the root causes. So Ekta,
share with us what in your opinion and experience have been the root causes of dropouts amongst girls? Yeah, thank you. Thank you for having me on this panel for this discussion. And yes, you're very right in pointing out that there are when we see the ultimate result is that girls are dropping out and they are not getting the education that they deserve to get. But if we see even not nationally, even globally, the scenario that we are seeing, in terms of what is happening to girls' education. Recently, what is happening in Afghanistan, we are all seeing, and that is why UNESCO has dedicated this year's International Day on Education to specifically on the theme of making sure that the denied right to education for girls from Afghanistan is ensured. So it is happening all across. So if we see, there are multiple lenses from which we can observe the causes that impact. First can be the category of the patriarchal mindset that is happening, that has been present in the society, though there has been progress on that. So then when you see that and you link it with the issues like, are we making enough provisions in the policies to make sure, because for girls, even today, going to a school or a college or an institution for education, the transit and going there is a challenge in terms of how they are viewed. They face eve teasing, they have to struggle with the family's mindset of are they safe, because we still struggle with this mindset that girls need to be protected. So that mindset prevails. So on one hand, we need to work on that mindset. So there needs to be policies, programs, interventions working on that. And on the other hand, then we need to see that, are we making provisions for enough schools, colleges closer to the girls? Are we making the transit easier? So like, for example, one should see that in the new change in terms of when we talk about consolidation, the education policy talks about consolidation of schools, a school complex. So in there we need to also think about questions like, when we have a school complex and so the girl has to, and we have lesser number of primary schools closer to that, can that impact the access to the school in terms of girls going to the school? So this is one area, the mindset and that how that impacts the girls going to the school. The second bucket, I would say, is the economic bucket. So again, how economics affects at the larger level, policy level, and how it percolates at the household levels and how that impacts. So in policy level, when you are not budgeting for enough teachers, and so there are not enough teachers in the schools and not enough girls, female teachers in the schools, then girls are discouraged in going to the school. So that becomes a challenge if the girls do not have a female teacher present in the school. So that is again a challenge. Infrastructure, in the sense that separate toilet facilities are not available, that becomes a challenge. And at levels of family, then it is that if and we saw it in the context of pandemic, during COVID times, when a lot of online learning was happening, girls were the worst hit. Access issues with girls as well. Because access issues, correct. Even if the mobile is at home, will that be available to a girl? Available, yeah. Or will parents or anybody will be ready to spend extra money for ensuring the girls' education? So then we should ask ourselves, do we have sufficient scholarships promoting the girls' education? For girls, yeah. Yeah. So yeah. I'll just because since we're talking of stops and all that, although I know we also have a very time barrier, I wanted to quickly touch upon that with Sudipta. Sudipta, can you kind of tell us, as Ekta's just pointed out, the kind of deficiency of schemes and policies? Can we do you have like a quick summarize? What are the major laws and schemes? I mean, we know the overarching act, and we know about the different promises, but specifically major laws and schemes which are there for ensuring the girls' rights to education, and
how are they translating the ground initiative at the ground? Okay, thank you for this. And yes, very genuine point is raised. But as far as concerned, that there are so many schemes to protect the girls and promote the education, that among them one of it is being shared, that Beti Bachao, Beti Padhao, Sure. and it state-wise it is different schemes are there, like Sukanya Samriddhi Yojana, Balika Samriddhi Yojana, even Mukhyamantri Rajshri Yojana. It depends upon the states. Every states there are some scheme. In Bihar, that is Mukhyamantri Mukhyamantri Kanya Samriddhi Yojana, Suraksha Yojana. So actually, the thing is that I feel these schemes is not reaching to the actual beneficiary at the grassroots level. And if there is the scheme is there, the awareness is not like that much to the means ground level, means the beneficiary, the actual beneficiaries. So in that case, what is happening is they are not able to avail these schemes, which is government is running for them. So there are so many good schemes are available to protect the education of the girl child. I mean, girls' education. So in this regard, I would like to share this thing. Thanks for that, Sudipta. In fact, you have also answered my next question. I was going to next ask you, how can we ensure that this marginalization, this dehumanization, how do we change that whole landscape, for them to spread awareness? But you yourself have said that awareness isn't there. I mean, there's need to raise that awareness. So with that, I'll go to Dr. Shaheen Ansari, who works with Child Rights and You. Sir, how do you think that how effective has the national plan of action? I mean, we're talking of this. I mean, every state has its own versions, every own specific scheme. But overall, as a national plan, how well has it percolated? Because Child Rights and You has SCRI, mainly works with child rights. I mean, that's the basic thing, and you have a fairly good presence across the country in various states. How do you see the national plan translating? How effective has it been in percolating to the last mile, to the most unreached populations? Sir? So, thank you, Danish, and thank you, Sphere India, UNICEF, and SCL Foundation for organizing this important webinar to celebrate girl child and enable them for education. So it's very important, and as said that the plan, girls plan, especially the one who mentioned Beti Bachao, Beti Padhao, scheme jo hai, they have three important components, and have to look through those components, those objectives. The objective number one is that to prevent gender-based sex selection. For that there is a lots of already existing PC and PNDT Act is already there, and this is one of the important component of this. And the second important is to ensure survival and protection of girl child, which is very important. And the third important objective of this Beti Bachao Beti Padhao is to ensure education and participation of the girl child. So if you look through it, if you see how well we are able to ensure this objective, and it only shows when, and we have a very recent example of how we reacted, we responded, we as a nation, we as an organization, and we as an individual responding to the crisis, to the sort of disaster, pandemic, COVID, how we respond. And we saw that the most affected were children, and among them were the girl child. Girl children the most affected. And we have a study. I mean, I had a study in West Bengal and this West Bengal and Bihar. We had a study, and we saw that girl child marriage has been a rise in 41% in West Bengal and 40% in Bihar. And what we found, as Ekta also mentioned, financial, the two most important
determinants of this was the financial constraint of that family where that girl was there, and of course educational attainment. We also, in the study, we found that those girls who were not in school were either going for the work and going for the child marriage. So all these three important objectives of the plan for girl child were not percolated at the village level. There may be some, benefit at the urban level, but we look at the village level, girls were still out of school. They were not preferred. There is a gender bias, and in the Haryana, if you go to the Haryana, I was going to a report on PC and PNDT Act. There was a report, and the girl child selection has been rise in the child selection and their abortion. So we have the plan is very good. But I know that's true. We're all aware over here that there is obviously a lot of there's a long way to go. right. So just trying to analyze the effectiveness about what exactly we need to do in terms of getting there. So that's what we're trying to. So my next question would obviously be, from the natural progression as to the, how this discussion, would be there. So Ekta, you talked about, kind of certain issues about, access and financial issues, economic issues of access and all that. How do we look at it from a social and emotional learning lens? I mean, try to ensure this, if we can also look at it that way. You talked about physical barriers, but there are also, I'm sure that there are a lot of social emotional learning barriers. For instance, Dr. Shaheen just talked about the girls, and you also talked about the girl child not being given access to a digital device, and Shaheen Saab also have talked about that. Yeah, I'm glad you are asking this question. It's a very important thing to also look at this from the angle of how it impacts children, girl children, the social and emotional. So it works at various levels. So we can see, from the very beginning, one thing is how the socialization is done, in the sense that what kind of values, how the society gives the gender stereotypes to the children from the very beginning. That has a lot of impact. The way the content is displayed in the books, in the textbook, in the curriculum, what is the display, and how that is also changing. And if you see the kind of analysis of what is the available content that is available to the children, in terms of their literature that is available, in terms of the textbooks that is available. So there is a progress in that, but still we are way behind in terms of providing material which promotes gender equity. Yeah, gender equity. So which is more transformational, gender transformational. Gender transformation is important. I myself would admit I've seen instances of stories or lessons wherein they constantly keep showing, the different roles of the family members. And the mother is displayed as either always cooking or washing clothes, for that matter. I have kind of applied these issues, and I'm pretty glad that things there. So, and then again, so when we talk about social and emotional aspect of learning, a lot is to do with the self-awareness of the image that a child develops of themselves, and which is directly related to the kind of resilience, that kind of coping skills that they would have, in situations where they would strive to learn, their learning trajectory will get positively impacted. So for girls, the kind of image that we are constantly building is not something which is supportive of their learning. And so with the boys, in general society, the kind of images that we are building is not that so supportive of, so in any face of any adverse situation like the pandemic or any adverse situation, you will find that the girls' education would be the first thing to get curtailed. And then the confidence level to learn
in terms of performing. We have misconceptions and myths like girls are not good at maths, conceptions like this are visible very early. These notions are existing in society. So unless conscious efforts are done through good literature, to conscious helping girl children build positive self-image, which will help their learning trajectory, and also children in general, when we are working with them, when we are preparing resilience in them, we are also including awareness about this aspect of equality in terms of gender, then we will be able to create an atmosphere, an ecosystem where girls are able to strive, even in face of adversity. And when they're already struggling with so many situations which are not in support of their learning, then further, it needs to be, there needs to be a support system, some counseling, some kind of these kind of mechanisms need to be present, which support girls in identifying right kind of careers. And Child Fund is doing that. We are doing an Udan project, and we do a lot of counseling also with girls in helping them build this positive self-image, helping them develop the resilience, the coping skills, and supporting their learning trajectories when they choose their right kind of careers. So well said. Yeah. So I also feel that Ekta, completely agree with what you're saying over there. There's also this threat. I mean, it's equally important. We keep talking about girls and girls and girls. Also important to equally educate the educators to align their kind of thinking, their thought processes, the content for that matter. You mentioned about content, also to prevent, you talked about equity, making a safer environment for girls to be able to. So equally important to also ensure that the boys are equally made aware, change this whole thinking, because this is also, because once the stereotypes are created, that can also be very harmful. So I mean, if you're talking in terms of, so over to you, Mr. Shaheen sir. My question here is that how do we change this? Because we are trying to build a society wherein we're trying to reduce gender-based violence. We're talking of how do we strategize towards that, so that we ensure that this environment, the learning environment for girls, is both safe and inclusive, and it kind of at par. How do you envisage that? How do we strategize thinking around preventing that, so that negative stereotypes are kind of not created? Rather, we can have an equal, like Ekta just said, a level playing field for both boys and girls. Yeah. We have to start right from our home. Correct. Because the learning start from the home. That's why we call mother tongue to language. Yeah. Then the whole other members of the society. So we have to ensure in our home, like last week, cry was, there was a campaign called period shame. We had a campaign for girls child, period shame in the school. The girl, you should not be ashamed of, that this is the natural thing. So, but we in the home, our objective was to ensure that in the home, girls are able to talk about this thing. The period, that this is a normal thing. The boy should know, the mother should know, the father should know. So what we have to start, we have to create environment at the home that any trouble, any hurdle, any कोई भी बाधा बच्ची के आसपास हो रहा है, वो वहां शुरू हो। अब तभी जो है वो स्कूल तक जा रहा है। Then there is a society, then there is a distance between school and the home. वो जो रास्ता जो होता है उसमें भी we have to, that is the society we call it. So we have to work at the SMC level, that is the school management system, because the SMC they are at the home and they're at the school also. So we have to work with SMC to strengthen how we create a friendly environment, a learning environment for a girl child. That's a very good point. Building, parental discourse around that and bringing together community. So yeah, like जैसा कि हम कहते हैं, चाहे वो हम बात करें school safety के, when we talk about school safety or DRR, if I talk about it at a very specific levels, it's like everybody's business. I think if we also try to create this narrative around that,
ensuring girls' education is everyone's business. Now I'll move to a more kind of a more recent and a more kind of topical, way, because as you know, COVID has also accentuated or exacerbated the kind of the advent of digital technologies in education. So my question is now to Mitra. Mitra, how do you think or how do you feel the digital tools or the rise in digital technology in ensuring access to girls has improved? Do you think there's a difference in that? Ekta talked about access to devices, but at the same time, as you know, digital technology has really changed it. But I'm coming to you to give us a different perspective of whether it has also had its positive effects in ensuring girls' education. देखिए दानिश जी, अभी जो बातें हुई हैं, जो एकता जी ने भी उठाई और शाहीन जी ने भी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिजिटल एक्सेस की जो बात है वो उसमें काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग और किसी चीज को आगे बढ़ाने में पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, वो तो बात सही समझ में आती है, लेकिन अगर आपके पास उसके लिए कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सॉरी टू से कि ये डिजिटल एक्सेस की जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के मुनाफा के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के मुनाफा के लिए, और एक बहुत बड़ी संख्या उससे ड्रॉप आउट हो जाए, जिससे कि बहुत सारी जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों से हमारी जो सरकारें हैं या जो उसको रन करने के आगे बढ़ाने की जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही थी, वो उससे मुक्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक पहली बात तो मैं यही कहूंगा इसमें कि डिजिटल एजुकेशन का जो पूरा मामला था, आप देखेंगे कि कोविड के आने के पहले भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो तो काफी लंबे समय से बन रही थी, जो 2020 में आई ठीक एंड कोविड के बीच में, और बिना किसी उस पे पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन के, और आज तक भी उसमें डिबेट डिस्कशन उस पर हुआ नहीं। अगर उसमें भी हम देखें कि उस डिजिटल एक्सरसाइज का फायदा किसको जा रहा है, जहां पे आपके पास घरों में एनएफएचएस का जो डेटा है वो बताता है कि 4% घरों में डिवाइसेस हैं, और वो डिवाइसेस भी उसके अलावा 11% के आसपास घरों में इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन वो भी लिमिटेड सुविधाएं हैं, और जिसका पहले अभी जिक्र किया जा चुका है। तो ऐसे में हम किस तरह से उनको बेनिफिट कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर हम बुनियादी शिक्षा के जो पहलू है ना, उनकी बुनियाद पर नहीं ध्यान देंगे, तो फिर ये तो एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज थी, होनी चाहिए थी। मतलब डिजिटल भी हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर लें, ऑनलाइन हम टीचिंग कर लें, या इस तरह की तमाम चीजें, लेकिन अगर हम शिक्षक और बच्चों के बीच की जो कड़ी है वो एक स्कूल है, और जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण टूल है, जहां पे सोशलाइजेशन की बात हुई, तो उस समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो अगर नहीं होती है, तो हम कोई एजुकेशन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, बेसिकली वो एक ऐसा राइट है ना जो व्यक्तित्व को गढ़ता है, बच्चे को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में बनाता है। तो ये बच्चियां हो या बच्चे हो, मुझे लगता है कि डिजिटल एक्सेस एक आगे चल करके एक बड़ा नाइटमेयर, दुस्वप्न साबित होने वाला है, और जहाँ पे ये पूरी यहाँ पे आंकड़ों के साथ जो बातचीत है कि तकरीबन 1 करोड़ बच्चियों पे पूरी शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो जाने का खतरा है, जिसपे तमाम संगठनों ने रिपोर्ट निकाली है। राइट टू एजुकेशन फोरम ने भी बीच में जो अपने सर्वे किए थे उसमें भी काफी चीजें निकल करके आई। हमने पॉलिसी ब्रीफ एक जारी किया था लैंडस्केप पे, गर्ल्स एजुकेशन पे एक लैंडस्केप स्टडी की थी, और उसमें भी जो आंकड़े आए हैं कि तकरीबन 40% से ज्यादा बच्चियां सेकेंडरी लेवल पे आते आते बाहर हो जाती हैं। तो हम किस चीज को इंश्योर करें, हमें ये प्रायोरिटी
देखनी होगी। और हमारी गुजारिश तो सरकार से फिर से यही है कि स्कूलों की बुनियाद को वो मजबूत करें। अभी शाहीन भाई ने एसएमसीज के बारे में बात की। एसएमसीज के जरिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एसएमसीज के जरिए, उनको ट्रेनिंग के जरिए भी हम इस तरह के कम्युनिटी के बीच में हम जा सकते हैं और उनको हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन एसएमसीज के लिए कोई स्पेसिफिकली सरकार की डिजिटल की तरफ से बात कर रहे ट्रेनिंग का थे। कोई प्रोसीजर ही नहीं फॉलो हो रहा है। नहीं, मैं डिजिटल उसका की बात कर रहा था, सॉरी, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा था, जी बट मैं जी कहने जी का मतलब है कि डिजिटल के लिए तो मुझे हम हाँ डिजिटल पे, टेक्नोलॉजी पे, जी क्योंकि जी बहुत ज्यादा डिजिटल के ऊपर काम हो रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी, मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी इज ओनली एज गुड एज इट्स यूजर्स। आप दुनिया भर के अगर एप्स बना लीजिए और तमाम चीजें कर लीजिए, सो थिंक वी आर आल्सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सो मैं कहना ये चाह रहा था कि if this technology in its design and if it's in its by definition, by its usage, if it's not geared, like Ekta talked about content, Shahin ji also talked about issues of around access, if it's by design not kind of developed to cater to the needs of a specific need, and the same goes for, I think, children with special needs also. So in that sense, the whole purpose is lost. तो हम उस पे थोड़ा सा ही चर्चा करना चाह रहे थे कि मतलब उसने वो जेंडर गैप ये किया है, नहीं कि क्या टेक्नोलॉजी एक तरफ तो एक्सेस के इश्यूज खड़े करती ही है कि मतलब बच्चियों को अगर डिवाइसेस नहीं मिल रही, ऑनलाइन क्लासेस में वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही, लेकिन साथ ही साथ क्या हम इंश्योर ये भी कर सकते हैं कि उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाए? मीन वी हैव एक्सेस टू कंटेंट, वी कैन शोकेस कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट, तो kind of that was like my question, but I'll just go to, before we go into the question and answer round, so Deepto, back to you. We would like to hear from you, as you again have your दानिश जी, मैं इसमें जी प्लीज मित्रा जी। क्या क्या आप या म्यूट पे, मैं बस एक बात इसमें आपकी बात के बाद मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपने सही कहा कि अगर उसका डिजाइन जो है डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल एम्पावरमेंट की, वो अगर सही नहीं होगा तो वो अपने पर्पस में डिफीट हो जाएगा। बात ये है कि ये जो डिजाइन चाहे, और डिजाइन आप चाहे जितना भी सही भी करें, उसके बावजूद अगर हम उसकी बुनियाद को और उसके जो मूलभूत जो उसके तत्व है, जो जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है और उसमें टीचर भी हैं पर्याप्त संख्या में, बच्चे भी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन तक एक दूसरे के साथ डायलॉग हो रहा है, ये अगर सिचुएशन को अगर हम पूरी तरह से लागू नहीं कर पाते हैं, तो डिजिटल के जरिए हम एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, हम बेसिकली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और इंफॉर्मेशन सूचना तंत्र के लिए वो डिजिटल डिवाइसेस का और डिजिटल इंफॉर्मेशन का उपयोग हो सकता है, टेक्नोलॉजी का, लेकिन वो बेसिकली शिक्षित करने के लिए नहीं उपयोग में आ पाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा संजीदगी से देखना चाहिए कि इसके आगे के परिणाम क्या होंगे, भविष्य में क्या होने वाला है, ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें ये देखना होगा। और इसके बावजूद कि डिजिटल जो या टेक्नोलॉजी के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद this is not addressed to me, but can I शायद एकता जी कुछ कहना चाहते हैं? Ekta ji, please feel free. No problem. I mean, we would like to. I'm sorry, I didn't mean if I'm being a little bit rude and cutting through, but I was conscious of the time. But let's have. I think it's an interesting discussion, so we can continue. I think. So I just wanted to make two points here. One thing is, when we are talking about digital, I think we need to like Mitra Ranjan ji also pointed it out कि वो एक मतलब माध्यम के तौर पे हम देख सकते हैं, मतलब it needs to be just one of the means, right? So it has a lot of potential if it is seen like that. So if we need to see whether it is teacher facing, it is system facing, or is it children facing. If it is children facing, जो कि आजकल ज्यादातर टेक कंपनीज है, बच्चों के हाथ में आप टैबलेट्स
और मोबाइल्स पकड़ा रहे हैं, उसके कई नुकसान हैं। उसके केवल ये नुकसान नहीं है कि डिजिटल डिवाइड है डेफिनेटली, बट जो जिन बच्चों के हाथ में गया है, इट हैज स्क्रीन टाइम रिलेटेड इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज चिल्ड्रन आर फेसिंग, वो है। पर अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आप जैसे कि I know of this course which is operated by UNESCO's MGIP, which is Global Yeah. Citizenship course. So That's where right. children from one country can contact children from another country, know about their culture, they can talk, interact. Okay, so if we are having some systems like that, again for all, but us tak pahunchne ke liye, let us first ensure the basics are there. So if we want to really use digital technologies, I think it should be teacher facing. जैसे teacher की capacities, और आपने पहले भी बात किया कि if we need to improve everything, we need to also capacitate teachers. So for their capacity building, उनको global चीजें क्या हो रही हैं उससे connect करने के लिए, community of learnings बनाने के लिए, if we are using digital technology, I think it will be a boon. But That's true. उस Yeah. तरह से हम सोच सकते हैं, मुझे लगता है. I totally agree with them. And मित्रा जी ने जो बात का जो एक मतलब जो एक रुख किया था, आई थिंक मुझे लगता है दोनों ही चीजें, मित्रा जी ने जो एक चीज ये कही थी कि आप डिजाइन कितना अच्छा कर लीजिए, अगर उसका कंटेंट नहीं सही है, या उसका कंटेंट, और मैं भी एक चीज उसमें ऐड करूंगा, कंटेंट और इंटेंट, you know, if it's not designed with the right meanings. Shahin ji, you wanted to add something to it? Yeah, मैं please. just जो मित्र रंजन जी ने और एकता ने जो बातें कही हैं, उसी में जरा मैं ऐड करा दूं. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा जो है ये प्रिविलेज नहीं है, ये अधिकार है ना. ये जो है दिस इज अ राइट, दिस नॉट अ प्रिविलेज. ये, और जब हम अधिकार की बात करते हैं, तो जब डिजिटल की बात करते हैं, तो जब तक आखिरी बच्चे तक डिजिटल डिवाइस या कनेक्शन सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. ये मैं जोड़ना चाहता था. Yeah, no doubt about it. I think हम I totally Shine Biden जो है वो एक बात कही जो बिल्कुल सही थी. हम डेटा के साथ खेलते रहते हैं कि साहब देखिए हमने इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, इतना डेटा, बट कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है कि 100% क्यों नहीं है. ये हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं, हमारी रीच है, जिसे ओके ठीक है भाई हमारे लिटरेसी रेट है, व्हाई डू वी सेटल फॉर नंबर्स दैट आर less than complete? So I think that's where we need to think. And I was coming to Sudipto with that. Sudipto, so thanks for waiting up. I had to come. So this whole landscape, I think, like I when we started off this discussion, I was talking about creating an ecosphere. Just like you, to implement an act or a policy, you need to create an ecosphere for ensuring, because the actual steps or the process is equally important. But in creating this ecosphere, the landscape, how do we change this from marginalization, dehumanization, and to kind of also spread that awareness to major, we talk within a rights based perspective, within having laws, within having schemes, but ecosphere को कैसे बेहतर करें हम rights की realization के लिए? जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स व्हिच इज गोइंग ऑन बाय द स्टेट्स इंडिविजुअली, एंड ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है. इट इज हैज बीन डिस्कस्ड दैट डन बाय एकता जी कि यस, जो सोशलाइजेशन है वो कैसे हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, जिससे हम वो उसको मतलब डील कर सके इन फ्यूचर में, कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके गर्ल्स एजुकेशन पे. तो यहाँ पर एक्चुअली ये जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या फिर किसी भी तरीके के अवेयरनेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर दो चीजें आती है. एक तो बच्चे एंड अबाउट फ्रॉम, जैसे कि हम साहिन जी ने भी कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम शुरू होता है वो घर से होता है. तो हम अगर किसी एक पर्सपेक्टिव को अवेयर करें तो वो मेरे हिसाब से वो 50% ही होगा. तो अगर हम जहाँ बच्चे को अवेयर कर रहे हैं, उस साइमल्टेनियसली हमें उनके गार्जियन को भी अवेयर करना चाहिए. तो मैं अपना एसओएस का उदाहरण एग्जांपल दूंगा, जिस तरीके से हम करते हैं. जैसे कि हम एसएचजी मॉड्यूल पे भी काम कर रहे हैं, एज वेल एज हम लोग बाल पंचायत को भी अभी बहुत फोकस किए हुए हैं, जहाँ पर हम बाल पंचायत बना के उनको लीडरशिप एंड उनके व्यूज एंड उनका आइडियाज को शेयर करने का विजडम प्रोवाइड करते हैं. And the same time with the SHGs, we deal with that, and we promoting the parenting skill, how to take care of a children, and we are regularly counseling through the SHG meetings, through many workshops,
to our beneficiaries. So I think अगर ये हम लोग jointly करें, एक साइड हम बच्चे को भी leadership provide कर रहे हैं and हम उसका wisdom को provide कर रहे हैं, दूसरा साइड में हम अगर SHG को भी हम उतना ही prompt करें through parenting skill कि कैसे उसका socialization होना चाहिए, तो ये बहुत हद तक ये चीजें जो है ये ठीक हो सकती है। और एक चीज बात करें, जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं, तो ये लैंडस्केप जो मतलब बहुत, इट इज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ लैंडस्केप, मींस एवरी सिचुएशन द इन एवरी प्लेसेस इन एवरी geographical context the discrimination is different, means somewhere it is very high, somewhere it is low, but discrimination is there. So in the same time, I would like to say there is some data which we are having. So India is right now saturated with the SHGs. Near about in the last 2022, near about 1.27 million SHGs are digitalized. It is only about the digitalization. So it is beyond that 1.27 million. So SHGs जो हमारा जो WCT वो वर्क करता है 5 प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हम एक प्रिंसिपल और अगर हम उसमें ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेफ्टी, तो एट ए टाइम वो अगर हम उस पर काम कर पाए तो एट ए टाइम वो अवेयरनेस का लेवल जो है डायरेक्टली 1.27 मिलियन तक पहुंच सकता है। और साइमल्टेनियसली अगर हम जैसे कि अभी हम एसएचजीस पे मतलब ऑल ओवर थ्रू द कंट्री एसएचजीस आर देयर, बट एज फार एज बाल पंचायत कंसर्न, बाल पंचायत इज नॉट देयर। तो अगर हम इसको भी साइमल्टेनियसली प्रमोट करें थ्रू आउट द कंट्री, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हम उसको मतलब एट द एज ऑफ नियर अबाउट मीन अबव 8 ही हम उसको प्लेटफॉर्म दे सके, जहां पर वो फ्रीली अपने लीडरशिप के लिए एंड अपने आइडियाज को शेयर कर सके। तो ये लैंडस्केप कहीं बहुत हद तक चेंज हो सकता है जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। तो हम बहुत, आपने हम सबको बहुत अच्छी चीज के लिए रिमाइंड किया, बाल पंचायत वाला। मतलब हम सब अलग अलग संस्थानों से, ऑर्गेनाइजेशन से हैं। हाउ मेनी ऑफ अस कैन एक्चुअली पुट आवर हैंड्स ऑन आवर हार्ट एंड से दैट हम अपने प्रोग्राम डिजाइन में, प्रोग्राम के उसमें जो है हम बच्चों को कंसल्ट करते हैं या पॉलिसीज या प्रोग्राम उसके लिए। I think it's also a very important lesson for us as practitioners to see that how many areas we have had children consultations. I can only recall one of my programs where we actually had a discourse with children, and that was on our school safety program. We were doing peer educators here in Jammu and Kashmir. In the school safety, we have these peer educators who take charge for their own school safety. But I think this is also a practice that needs to be popularized. बहुत सही आपने बात सुदीप्ता कही कि बाल पंचायत बच्चों का उसमें जुड़ना, हम हमेशा अपने आप को कि एज पॉलिसी मेकर्स, एज प्रोग्रामर्स एंड planners and government, we all just keep thinking we know what's best for the child. I mean, we don't like to take their concern. I know at a very young age maybe it might not be possible, but at a certain age children can actually give their inputs. So thank you for that very rich discussion. I think we've got some very good insights and inputs. I've tried to summarize some of them, and Siljo has also been taking some notes and put in some this thing. I think we have time for some questions. I can see some hands, I can see some comments. So maybe if you want to, Siljo, take the questions and we'll try to have these them answer. I'll just look at the content at the chat window first. It's sounding more like comments. So I don't think this thing, I mean, we have this comments from Chandrasekhar Jha has his hand up. So would you want to unmute him and he has a question? And I think we have one question before that from Pradeep Swain. But let's listen to Chandrasekhar Jha ji, so that then we can move on to the question in the chat box. Chandrasekhar ji. जी सभी को नमस्ते। थोड़ा मैं विलंब से जुड़ा तो क्योंकि ये तकनीकी जो है उसमें मैं पूरा मैच्योर्ड नहीं हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे। नहीं और अभी जो बातें हुई बहुत अच्छी लगी। एक तो सारी जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए और ये सुनिश्चित करना ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है और हम लोगों की भी जो है ये जिम्मेदारी है। इसमें एक ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि शिक्षा, हम यदि शिक्षा में सही समझ ना हो और शिक्षा में यदि रोजगारोन्मुखी शिक्षा ना हो शुरू से ही, मतलब आरंभ से ही, तो इतनी ज्यादा समस्याएं जो हैं ये खड़ी होती हैं, जो खास करके मैं अब अपने जीवन से भी देख रहा हूं
और जिस गांव में मैं रहता हूं, जिस एरिया में रहता हूं, तो पढ़ाई के साथ साथ शुरू से ही हमें एक बहुत आवश्यकता है सही समझ देने की, फिर स्किल जो लाइफ स्किल है उसकी भी देने की, और तीसरी बात कि थोड़ा भी यदि वो पढ़ ले तो उनको रोजगार तलाश में जो है ये समस्या ना हो। यदि ये तीनों हम यदि ये ध्यान रखते हैं तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन होगा वो शिक्षा का मानवीयकरण होगा। नहीं तो इतनी बड़ी भीड़ बढ़ती है, इतने ज्यादा अपराध जो हैं ये बढ़ते हैं। और अभी डिजिटल की जो बात हुई थी, तो जितनी ज्यादा गंदी चीजें आती हैं ये, तो कोई तो अनपढ़ जो है ये है नहीं, सारे के सारे लोग जो हैं ये पढ़े लिखे ही हैं। तो पूरा का पूरा शिक्षा का मानवीय का जो करण है इसकी बहुत आवश्यकता है। और 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार की है, उसमें थोड़ी संभावनाएं जो हैं वो बंद जो हैं वो रही हैं। तो उस ओर भी मैं थोड़ा ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा को एक हमें संपूर्णता में लेना चाहिए, और सही समझ है, सही जीना है, लाइफ स्किल है, और फिर उनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। यही बात कहनी थी। बहुत बहुत बढ़िया चंद्रशेखर जी, आपने दो तीन पहलुओं पर जो रोशनी डाली है। पहली आपने जो बात कही है कि इसका भी जो है वो मतलब शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य है वो उसका उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और एनईपी ने भी इस चीज के ऊपर बहुत काफी जो है तवज्जो दी है कि कैसे हम एजुकेशन को, शिक्षा को स्किलिंग से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जोड़े। वो तो खैर है, बिकॉज इट्स अनरिलेटेड, आई जस्ट kind of respond to that, unrelated to this topic of discussion. But yes, I mean that also has a context that we, some of the benefits definitely will trickle down. There have to be some focus attention towards what the actions that we need for girl children that are also important. वो भी बहुत जरूरी है कि बच्चियों के लिए भी हमारे जो वैसे कोशिशें हैं जारी वो भी होती रहे, लेकिन जब बहुत सारे ओवरऑल जैसे ओवरआर्चिंग रिफॉर्म्स शिक्षा में होंगे तो उसका इफेक्ट भी बच्चियों तक पहुंचेगा। तो एक तो आपने शिक्षा से रोजगार तक का जो सफर है उसकी बात की, दूसरी जो आपने डिजिटल के ऊपर की है, आपका एप्रीहेंशन है डिजिटल में भी है। इसीलिए अब इसी पॉलिसी के अंतर्गत, और आप जानते भी इस चीज के लिए होंगे कि डिजिटल सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के लिए कि बहुत सारे मापदंड भी बनाए जा रहे हैं। इसकी भी शिक्षा, इसकी इंफॉर्मेशन, इसके लिए भी हम कर रहे हैं कोशिशें। तो आई होप कि वो चीज भी जो है आने वाले टाइम में देखी जा सकती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है मिस्टर जावेद ताक का हाथ में देख रहा हूँ। मिस्टर जावेद ताक, you want to unmute and place your question, please. हेलो, मैं जावेद हूँ और मेरा एक ही कंसर्न है कि जो बेटियों की जब बात आती है तो जो डिसेबल लड़कियां हैं वो भी बेटियां ही है। लेकिन इस वक्त जो मेरे मन में एक तस्वीर बनी हुई है कि हमारी यहाँ बहुत सारी बेटियां हैं जो पढ़ने लिखने से तो बिल्कुल। I think we lost you, Javed bhai. He's muted. He's himself muted. आप म्यूट हो गए। He's mute. He's mute. ज्यादा दुश्वारी आती है कि इंडिपेंडेंट लिविंग उनकी नहीं हो पा रही है, रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रही है। और उसके बाद एक मौका ऐसा आता है कि पेरेंटल सपोर्ट लॉस हो जाता है और बहुत सारी हमारी बेटियां जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो सीवियर डिसेबिलिटी की शिकार है और अपने घरों में अलग थलग से रह रही है। उनका कोई केयर टेकिंग नहीं है, किसी के घर में भाई नहीं है, किसी के घर में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है कि वो अलग थलग रहने पे मजबूर है, कोई केयर टेकर नहीं है, पहले से ही उनकी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है, तो कुछ सपोर्ट सिस्टम उनको नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो पॉलिसीज बन रही है वहाँ पे एक बड़ी चूक हो रही है कि हम उनमें इंक्लूजन नहीं ला रहे हैं। अगर कोई बड़ी सतह पे एनजीओज एक बड़ा प्लान लेके भी आती है तो इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बहुत सारी चूक रह जाती है। उसमें हम वो चीजें नहीं ऐड कर पाते हैं कि जहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूड हो, उनका एक रोल हो, उनका भी सुना जाए और जो पॉलिसियां बनती है उनका भी रोल हो, ताकि हम
कंक्रीट पॉलिसी और पॉजिटिव पॉलिसीज बनाए, ताकि इन बेटियों का जो बेटी बचाओ का नारा है वो 100% रहे। कुछ बेटियां वरना रह जाती है। थैंक यू। बिल्कुल बेशक, I'll hand over that question to our panelists, because obviously the issue of I mean, here I think Javed ji has talked about two cross-cutting issues. We already have the issue of the exclusion of girl child, and on top of that you have the double kind of jeopardy here with terms of children with disabilities. So the question is open to the panel if anybody would like to take that. दोनों ही हमारे मसले हैं। एक तो हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से ग्रैपल कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर उसमें एक एडेड डिसएडवांटेज डिसेबिलिटी की भी है तो उसके लिए हम क्या इंश्योर कर सकते हैं। Anybody in the panel would like to take that? दानिश जी। जी हेलो। हाँ मित्रा जी प्लीज। दानिश जी आवाज जा रही है? आवाज बिल्कुल जा रही है। जावेद जी का सवाल ये था कि मतलब एक तरफ तो हम जावेद जी ने काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और पिछले जी तो मैं एक शेयरिंग ये करना चाहता था कि राइट टू एजुकेशन फोरम ने और आस्था एक डिसेबिलिटी पे काम करने वाला एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और काफी लंबे समय से तकरीबन 3 दशकों से वो डिसेबिलिटी सेक्टर पे फोकस करके उसने काम किया है। हम लोगों ने इस पैंडेमिक के बीच में बिहार और दिल्ली के भीतर तकरीबन 10 जिलों में एक सर्वे किया, और उसमें भी नतीजे इतने खराब और इतने चिंताजनक हैं कि जो जावेद जी के बातों को काफी पुष्ट करता है। और ये सही बात है कि अगर हम पॉलिसी लेवल पे इस चीज को एड्रेस नहीं करते, और उसमें एक बात और है कि डिसेबिलिटी कई तरह की है, न केवल फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, बल्कि देखिए अगर हम चीजों को दूर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए जो पर्याप्त व्यवस्था है, जो उसके लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग पाए हुए जो शिक्षक हो, या क्लासरूम्स में पहुंचने तक की जो बात है, लोगों के साथ बैठने तक की बात है, ये अगर नहीं होगा तो डिसेबल बच्चों को भी उस तरह की शिक्षा मिल नहीं पाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक देखिए काफी इस तरह का भी परसेप्शन है कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको हम ऑनलाइन या जो रिमोट लर्निंग वाला जो सिस्टम है उसके साथ हम घर में बैठे बैठे उनको हम शिक्षा मुहैया करा दें, तो बेसिकली वो शिक्षा है नहीं। अगर वो समाज के बाकी लोगों के साथ अगर वो हम उनको बैठा नहीं पाए, और अगर बाकी बच्चों में या पूरे समाज में भी अगर हम डिसेबिलिटी के प्रति एक सेंसिटिव नजरिया नहीं विकसित कर पाए, जो कि विकास तभी संभव है जब एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ते हुए और फिर हम एक दूसरे की जो परेशानियां हैं वो समझते हुए करें। तो निश्चित तौर पे ये आरटी एक्ट के भीतर भी ये प्रावधान था कि इस तरह के जितने बच्चे हैं उसके लिए कोई अलग थलग की व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। उनकी व्यवस्था करते हुए उनके लिए जो एडिशनल जो चीज चाहिए वो हमें मुहैया कराना है, सरकार को मुहैया कराना है, और उसके साथ साथ वो लर्निंग के उस प्रोसेस में आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चिंता की बात है कि आज रिमोट लर्निंग हो या बाकी इस तरह की जो चीजें हैं उसको हम लोग ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की एक बातें जो है हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. We are like a little above time, and thank you to all our distinguished panelists here for giving their input, sharing their experiences. We've gone above time, and we'll have to wrap up. So with that, we'll set up the final questions. I think if there are any further questions, you can just drop it in your chat box with your email, and we'll try to respond to them. But I'll have to summarize this as I also have to jump into another meeting, which I have to push forward. So
Moving on, I think we have to, I think what we started off in this discussion, जो बात से शुरू की थी कि हमें शायद स्कीम्स और पॉलिसीज में हमें मूव इन करना पड़ेगा सिर्फ ब्रांडिंग और प्रमोशन के अलावा। आई थिंक उसका स्कीम का एक्चुअल डिसबर्सल, उसका एक्चुअल रियलाइजेशन, जो मित्रा जी ने एक बात कही थी, और वो अगर एलिमेंट्री एजुकेशन से हम अगर गर्ल एजुकेशन में फोकस करते रहे, तो आई थिंक वो जो पॉलिसीज हैं, एक्ट्स है, उनको एक्शन प्लान्स में, तो हम जब पॉलिसीज और प्लान्स बनाए, उसके साथ ही साथ एक्शन प्लान्स भी अगर एक्शनेबल प्लान्स हैं, और मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि एक्शन प्लान्स के लिए जरूरी ये भी है कि हम जब एक्शन प्लान्स बनाए तो उसके लिए कुछ एक्शनेबल आइटम्स, कुछ टाइमलाइंस और कुछ मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स, जैसे कि हम अपने ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में करते हैं, अगर हम कुछ इंडिकेटर्स और कुछ उसके टाइमलाइन सेट करते हैं तो इट विल बिकम मच मोर एक्शनेबल। फिर उसके बाद जो हम रूट कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं कि एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, और उसके बाद जो ट्रांजिट की बात एकता जी ने कही, उसके बाद स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, एक्सेसिबिलिटी, और इसके लिए जरूरत है कन्वर्जेंस की। सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार ना हो, बल्कि साथ ही साथ हम दूसरे डिपार्टमेंट से भी गुहार करें जिनके पास इस तरह की स्कीम्स हों गर्ल चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट है या सोशल वेलफेयर है, तो वो भी बच्चों के लिए जो स्कीम्स है मुहैया कराए। इसके लिए स्कॉलरशिप्स हो गई जैसे, या पॉलिसीज बनाए, तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स भी कर सकते हैं इस चीज को। कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा कि कई जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, कमिश्नर्स ने भी बहुत सारे policies की। So I think this all depends on individual will. And also, I think that whole mindset, we talked about changing mindset starting from home. I think as a community, as a society, encouraging parents to start off thinking, that patriarchal, that can be done to a great extent by social behavior change. If we kind of create that demand for girls' education, I mean, parents coming forward and saying, we do want to educate our children, and you please take them. And we then work with the communities, with the school management committees, with the school village education committees. And I think in a way, we also touched upon the digital tools, digital technology. I believe today we feel that digital technology has a answer to every problem. But I think it's only as good as how we design and how we create the content and our intent towards it. And finally, I think one very brilliant point that came in from Sudeepta talked about the kind of taking the advice of children, involving children in kind of designing of their programs, and then that to a great extent will also help our intent. So I think with that, we have summarized this to our participants. Thank you so much for patiently listening to our panelists. Thank you very much. Over to you, Siljo, for summarizing this session. I think that part you have already done, sir, in a very beautiful and comprehensive manner. It was indeed a great panel which we had today, and everyone did justice to their part. I know the time was very limited, considering the type of the entire theme and the broad structure which we have created, but still, with your vast knowledge, you have talked to the point and have given concrete action points to move ahead. So thank you so much to moderator Danish sir for taking control of the entire panel and to give your key inputs in each of the topics, and to all the panelists from different everyone comes from different sector, different organizations, to bring in all their different viewpoints into a common platform and to collide everything for the common agenda was great to see. And all the participants, they also have been very keen to take part in these discussions, and thank you so much for all in all making this a wonderful program. And with this, I think we can wrap for the day, and you'll stay connected, and thank you. We'll get back to you with the report and the way forward. I think that's all from my side. Happy to be there with you all. Thank you so much, guys. Have a good day and happy Republic Day to all of you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank Take you, care, Siljo. everyone.